guys, good morning and welcome back to my channel and welcome to another vlog. So basically today's day is going to be little hectic. So basically guys, I need to go to office today like around 2 o'clock because I usually do afternoon shifts. Not usually, it depends on the shift roster. Basically it rotates according to the weeks. But today is afternoon shift and I need to go there like to the office. And also guys, like you know, it's a US based client, so हमको उस time के according चलना पड़ता है like PST timings. So that's why I need to go to office around 2 o'clock. And अभी का update ये है, I ordered Philips का induction okay from Amazon and वो अभी deliver हुआ है. And also I ordered cookware set which can be used in induction, जो induction friendly होते हैं basically. तो वो ऑर्डर किया, वो डिलीवर हुआ था. अभी मैंने कल ही ऑर्डर किया था एंड अभी वो 10 o'clock से पहले डिलीवर हो चुका है. लेट्स ओपन इट गाइस एंड चेक हाउ इज इट. एंड लाइक सुपर एक्साइटेड, आई वाज लविंग दैट इंडक्शन ऑन द पिक्चर एंड रिव्यूज भी काफ़ी अच्छे थे. सो देखते हैं कैसा है. I mean, it's looking very pretty. I really loved how it looks like. And also, you know, I did quite a lot of research कि कौन सा अच्छा इंडक्शन है. There were like many cheap inductions also, like कम प्राइस में. But I was like, but उनके इतने कुछ खास अच्छे रिव्यूज़ नहीं थे. एंड मेरे को एक अच्छे ही इंडक्शन में इन्वेस्ट करना था बिकॉज इट्स यू नो अ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट. तो फालतू में बेकार इंडक्शन में करके कोई फ़ायदा नहीं था. एंड प्लीज़ गाइज इग्नोर द मेस, इट्स रियली मेसी राइट नाउ. एंड अभी मेरे को देखना है ये कि कैसे वर्क करेगा. आई चेक दिस मैनुअल, इसके साथ मैनुअल भी आया है. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. एंड यू नो मैं चेक करती हूँ, नहीं समझ आएगा तो आई चेक सम यूट्यूब वीडियो ऑल्सो एंड देन वील मेक समथिंग मीठा ऑन दिस. सो बेसिकली आई एम थिंकिंग कि मेरे पास गाजर का हलवा रखा हुआ है. सो हम वो इस पर हीट कर सकते हैं एंड देन वील इंजॉय गाजर का हलवा बिकॉज ऑब्वियसली इट्स विंटर्स. आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू टेल यू, आई ऑल्सो ऑर्डर्ड कुकवेयर सेट जो कि इंडक्शन पर काम करेगा क्योंकि यू कांट यूज़ नॉर्मल वाला बर्तन ऑन इंडक्शन. सो दैट्स वाई मैंने इंडक्शन फ्रेंडली जो कुकवेयर सेट आता है वो ऑर्डर किया है. सो एंड इट्स फ्रॉम द ब्रांड वंडर शेफ. मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया बेसिकली ये. सो लेट्स ओपन दिस, कैसा है लेट्स सी. It looks quite pretty. Then this is the pan and also there is this kadai kind of thing with the lid. And this is the lid. Okay, it looks very pretty. मैं पहले क्लीनिंग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा गंदा रूम हो रहा है. I'll show like right now. So this is how it is looking. काफ़ी ज़्यादा messy हो रहा है. So I'm thinking to clean it first and then we'll you know heat गाजर का हलवा and all of those. So बहुत ज़रूरी है पहले क्लीनिंग करना जिससे कि you know that you know I can process my mind properly. तो पहले क्लीनिंग करते हैं. So guys, hi, checking in a while. So I was cleaning the room, almost room clean हो गया है. Just need to change the bed sheet. But first of all, I'm thinking to prepare that gajar ka halwa. I mean heat that gajar ka halwa because I am feeling hungry and I think it's a great way to start a day. वैसे तो usually I don't eat sweet things in the morning like dessert, any dessert in the morning. But right now I'm feeling like that and बहुत ठंड था वैसे भी सुबह. तो अभी गाजर का हलवा खाना है. आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑप्शन. प्लस वी गॉट न्यू इंडक्शन तो उसका भी यू नो स्वागत हो जाएगा. सो या लेट्स हीट गाजर का हलवा एंड देन आई विल चेंज द बेड शीट एंड एवरीथिंग.
द क्लीनिंग इज डन एंड मैंने बेडशीट भी चेंज कर दिया। मैं भी आपको रूम का दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। एक बार रूम साफ हो जाता है, क्लीनिंग हो जाता है प्रॉपर्ली, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बिल्कुल ऐसा रिलैक्स्ड फील होता है। So now guys, I need to go to office. Right now it's around 1:30 and I need to get ready because I need to go to office. And also you can clearly see my skin. I mean, there is zero glow, बिल्कुल भी glow नहीं है. It's not looking good and there is no light reflection. I am literally standing in front of the window and बिल्कुल भी मतलब मेरा skin glow ही नहीं लग रहा है, glass like नहीं लग रहा है. I'm going to follow 2-step regime which can literally help to make my skin very juicy and glass like. So first of all, I'm going to use Mamaearth Rice face wash, and you know what, this face wash is like so good. It literally cleanses my skin and removes all the grime and grease from my skin, and also it provides me with that dewy and refreshed look. So I'm going to use this today. And also guys, talking about the ingredients, it has the goodness of rice water and niacinamide. This face wash is rich in antioxidants that literally help reduce blemishes and dark spots, and also unlike other face washes, its creamy texture does not strip your skin's essential moisture after cleansing. Instead, it adds a boost of hydration to your skin and locks it in. And the goodness of niacinamide in the rice face wash reduces the appearance of acne marks and brightens the skin tone to give you that glass like radiant skin that you have been wishing for. You can clearly see कितना ज़्यादा clean लग रहा है face, and प्लम्प्ड लग रहा है स्किन और हेल्दी लग रहा है. सो आई लिटरली लाइक टू यूज दिस फेस वॉश. मतलब इंस्टेंट रिजल्ट आपको दिखता है, कितना ज़्यादा क्लीन हो जाता है फेस. एंड ऑल्सो गाइज, Mamaearth इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड. एवरी टाइम you buy from them, they link your order on a website to a tree that they plant, and also by 2025 they are aiming to plant 1 million trees as part of their initiative, and it feels like amazing initiative. And now guys, I'm going to use rice oil free moisturizer from the brand Mamaearth. And you know what, it contains the goodness of rice water, niacinamide and black coats, and all of these ingredients are so good for dewy skin. So I'm going to use this moisturizer now. It's very lightweight moisturizer, okay? And just look at the texture. Oh my god, it's very lightweight and it just absorbs into the skin so quickly. This moisturizer instantly moisturizes and brightens my skin, and also rice water is proven to add a surge of moisture, reviving your skin's glow, and niacinamide minimizes the appearance of pores and works towards building the lipid layer, improving the skin's overall texture. I literally love this ingredient. It properly hydrates my skin to make it glass-like and luminous, and it's non-sticky and non-oily. Also guys, as you know, Mamaearth products are available on Amazon, Nike and Flipkart, but they're also now available in stores near you. Message me or comment down below the next time you spot a Mamaearth store near you. You can clearly see the glow on my face right now. My skin is looking so glass like, juicy and dewy, and I'm literally loving it right now. You can get these two products from their official website mamaearth.in, and you can use my code Granule 2023 for additional 20% off. And also guys, their products are available on Amazon, Nykaa, Purple and Flipkart. Mamaearth has launched their official app. Users get early access to sales and get extra discount, and these products are also available on their official app. So go check out the link in description box and order these products guys. And now guys, I need to get ready because I need to go to office. I'm getting late, so yeah, I'll get ready now. I'll do little bit of makeup, just concealer and mascara and lipstick, that's it. So now I'll do that and then we'll rush to office. I'm applying concealer right now. बहुत थोड़ा सा लगाया just under eyes में, and I'm going to blend it with my fingers only because किसी पे इतना टाइम नहीं होता है ऑफिस जाते वक्त कि वो brushes and all of those things का यूज़ करे. So I'm just going to blend it with my fingers. Now guys, I'm using mascara. Mascara is on guys. कितना ज़्यादा difference आ जाता है mascara लगाने के बाद. Also I'm thinking to apply a little blush. So yeah, I'm in a mood of blush today.
आई एम रेडी एंड एज यू कैन सी कितना ज़्यादा अच्छा और फ्लॉलेस स्किन लग रहा है, जस्ट बिकॉज आई वॉश्ड माई फेस प्रॉपरली एंड आई मॉइस्चराइज्ड इट वेल विद अ नाइस मॉइस्चराइजर, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस और ग्लास लाइक स्किन लग रहा है, बहुत ज़्यादा डूई लग रहा है। या नाउ आई कोम माई हेयर एंड देन आई गो टू ऑफिस, वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, सो आई रश टू ऑफिस नाउ। Hi guys, it's the next day and yesterday I went to office and then I came late. There was a lot of work, so at the end I was like a little bit tired, so I was not able to continue the vlog. By the way guys, there is something interesting coming up in the video only, in this video only. So basically guys, the other day I checked out one recipe on Instagram. It was like Instagram viral recipe and I was scrolling the other day, तो मैंने ऐसे इसको मेरे को रील्स में आ गया था एंड इट वॉज लुकिंग सो यम। आई मीन बहुत ज़्यादा ईजी रेसिपी था, इतना कुछ ड्रामा नहीं था उसमें, एंड कितना ज़्यादा यम लग रहा था, बिल्कुल ऐसे बॉम्बे स्ट्रीट फूड काइंड ऑफ फील दे रहा था। एंड इट वॉज द नेम बॉम्बे मसाला पाव, बहुत ज़्यादा यमी लग रहा था। सो आई एम थिंकिंग टू प्रिपेयर इट। मैं थोड़ा एक बार चेंज कर लेती हूँ, ड्रेसअप हो जाती हूँ एंड देन आई विल प्रिपेयर इट फॉर लंच। आई एम थिंकिंग लाइक दैट। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। आई डोंट नो कितना अच्छा बनेगा कितना अच्छा नहीं बनेगा, बिकॉज रेसिपी में तो बहुत ईजी लग रहा था, बट आई एम नॉट श्योर कैसा लगेगा। सो वील चेक इट आउट, वील सी द रेसिपी वंस अगेन एंड आई एम थिंकिंग टू प्रिपेयर इट ऑन द न्यू इंडक्शन। राइट नाउ आई एम इन अ मोड ऑफ न्यू इंडक्शन ओनली, सो दैट्स वाई आई एम थिंकिंग कि आज बना सकते हैं। वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी बनाने का, बट इंडक्शन नहीं था, तो आई वॉज लाइक यार कैसे बनाऊंगी एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई लिव इन अ पीजी, तो नीचे जाकर उनकी किचन में कुक करना इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया, एंड वहाँ पर शूट करना इट वॉज नॉट अ रियली ग्रेट आइडिया। सो दैट्स वाई आई वॉज वेटिंग फॉर इंडक्शन and now I can shoot that recipe and try that recipe out. I mean I'm like super excited, बहुत ज़्यादा यमी लग रहा था एंड मैंने काफ़ी टाइम से ना उसको सेव कर रखा था। सो या टुडे इज़ द डे, we'll try out that Instagram viral recipe and it's not a healthy recipe but it is like a Mumbai street food and it's looking so yum. So we'll try it out. So I'll see you in a bit. First I'll change into something and then I'll take bath and everything and then I'll prepare that recipe. Okay, bye bye. So basically guys, they prepared some paste with chilies and garlic, तो हम वो नहीं करने वाले, उसकी जगह we are going to use शेजवान चटनी। तो वो थोड़ा easy process है, तो मैं शेजवान चटनी यूज़ करने वाली हूँ आज। I mean इतना टेस्टी बना है, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस रेसिपी। फैंटास्टिक, आई मीन बहुत ज़्यादा अच्छा है। सेकेंड वन, काफ़ी इजी है, लग रहा होगा मे बी थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा इजी है बट एंड इतना ज़्यादा टेस्टी बना है ना, डेफिनेटली गोइंग टू मेक इट अगेन एंड अगेन। मतलब आई रियली लव्ड इट।